Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's session is a review of 3D, three-dimensional coordinate system or coordinate geometry. It is the topic from the subject EFT, that is electromagnetic field theory or simply electromagnetics. Dear students, earlier few months ago I have already created videos related to unit number 3, 4, 5 and 6. Only unit number 1 and 2 were remaining, so that's what I am completing right now. So first part we'll discuss the concept of different three-dimensional coordinate system. देख लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट क्वेश्चंस इस पे एक्सपेक्टेड नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रू आउट द सब्जेक्ट whatever you are doing, whether you are attempting derivation or you are attempting numerical, you should have proper knowledge of coordinate system. तो ये बहुत basic चीज़ है. You need to understand the basics related to different coordinate systems. So in this subject we will be using three types of coordinate system. First is Cartesian or rectangular coordinate system. Throughout the subject the axis will be like this. We will be using three-dimensional system. So axes are x, y and z. X and y axis are like this. Z axis is always and always vertical. अब देखो in maths you might have used these notations I, J, K to represent unit vectors. In this subject we know that unit vector is a vector having magnitude 1 and it is used to just give an idea of the direction. In this subject we will be using the notations ax bar, ay bar and az bar related to three axes, x axis, y axis and z axis. So these are the notations we will be using in this subject ax bar, ay bar and az bar to represent the unit vector. I have drawn different diagrams, different axes. So this is x axis, y axis and z axis. Make the thing simple. If I will join the axis like this, I will get one plane. This is a horizontal plane. This is called XY plane. बहुत सिंपल लॉजिक है. X और Y एक्सिस ज्वाइन करके मैंने एक प्लेन बनाया. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है. So the name is XY plane. This is also called Z is equals to 0 plane. Why? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है. इस एक्सिस पे हमने Z मार्क किया है. तो इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 होगा, z इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. तो इस पॉइंट पे दिस प्लेन व्हिच वी कॉल इट एज xy प्लेन इज एट ओरिजिन, सो इट इज आल्सो नेम्ड एज z इज इक्वल टू 0 प्लेन. अब मैं और एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ. आई विल ड्रॉ वन मोर प्लेन व्हिच इज अगेन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये सपोज z इज इक्वल टू 5 मैंने एज्यूम किया है और यहाँ पे z एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है. इस वर्टिकल एक्सिस को मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ. डू नॉट गेट कंफ्यूज. एक्सिस वर्टिकल है, उसको परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, सो इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस. ये वर्टिकल एक्सिस है और एक प्लेन मैंने एज्यूम किया तो ये प्लेन ऐसा होगा. सो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो ये जो प्लेन है दिस आई हैव ड्रॉन इट एट z इज इक्वल टू 5. अब देखो ये xy प्लेन है, मतलब z इज इक्वल टू 0 प्लेन है. दिस इज द प्लेन व्हिच इज एट z इज इक्वल टू 5. टू प्लेन्स आर देयर व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर. तो दो अगर प्लेन्स पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट यहाँ का ले लो. सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. Every point will be at equal distance from xy plane और ये distance होगा z is equals to constant. That's why this plane is named as z is equals to constant plane. Z is equals to constant plane. From the exam point of view याद कैसे रखना है. देखो जिस एक्सिस को जो प्लेन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस एक्सिस का नाम देना है. मतलब this plane is perpendicular to z axis, so I am calling it as z is equals to constant plane. Likewise x axis को मैं एक perpendicular plane draw करता हूँ ऐसे. so this will be ये जो plane है previously ये जो plane हमने डिस्कस किया है it was z is equals to constant plane and we discussed it is a horizontal plane. Likewise ये प्लेन मैंने और एक प्लेन ड्रॉ किया which is perpendicular to x axis. तो जैसे मैंने बताया जिस एक्सिस को परपेंडिकुलर प्लेन है उस एक्सिस का नाम देना है. मतलब दिस आई विल बी कॉलिंग इट एज x is equals to constant plane.
सेम वे ये वाई एक्सिस है, उसको एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. This is a perpendicular plane to y-axis. Since it is perpendicular to y-axis, I will be calling it as y is equals to constant plane. Now try to understand the analogy. ये जो दो प्लेन्स अभी मैंने ड्रॉ किया एक ही डायग्राम में, these are x is equals to constant plane and y is equals to constant plane. These two planes are vertical planes. If you take intersection of two vertical planes, डू रिकॉल द थिंग्स. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन. जैसे एक ये वर्टिकल प्लेन है, सेकंड वर्टिकल प्लेन इज लाइक दिस. सो इफ यू टेक द इंटरसेक्शन, ये एक वर्टिकल प्लेन ऐसा है, दूसरा वर्टिकल प्लेन ऐसा है, इंटरसेक्शन विल बी दिस वर्टिकल लाइन. इट इज अ कॉमन पोर्शन. सो इंटरसेक्शन ऑफ टू वर्टिकल प्लेन्स विल बी अ वर्टिकल लाइन. दैट वर्टिकल लाइन आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर इन द फर्स्ट डायग्राम. ये एक लाइन आ गया which I got it due to intersection of x is equals to constant and y is equals to constant plane. अब देखो ये vertical line आ गया. If I will take intersection of this vertical line with z is equals to constant plane, recall the things. z is equals to constant plane मतलब ये horizontal plane है, ऐसा ये एक vertical line है. If you take the intersection, I mean this line will pass through this plane through one point. So intersection of z is equals to constant plane and this vertical line which we got due to intersection of x and y is equals to constant plane will be a point P. और इसके कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा x, y, z. Now the question arises why I am writing notations x, y, z. Very simple logic. ये पॉइंट कैसे जनरेट किया है? I have taken intersection of three planes, namely x is equals to constant, y is equals to constant and z is equals to constant. So the coordinates of point P are x, y and z. This is the reason why we do not point P as x, y and z. इससे पहले आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखे होंगे. कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं p, x, y. दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल सिस्टम. अब देखो इस सब्जेक्ट में विल बी यूजिंग थ्री डायमेंशनल सिस्टम. सो कोऑर्डिनेट्स आर p, x, y, z. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. इफ यू आर ड्राइंग द डायग्राम रिलेटेड टू टू एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग x एक्सिस लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग y एक्सिस लिखते हैं. एक पॉइंट कंसिडर करते हैं. जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है. आई एम टॉकिंग अबाउट टू डायमेंशंस x एंड y, जो हम लोग नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सपोज एक पॉइंट ये है, इसके x और y कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. लेट अस से दिस पॉइंट इज a. इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन दिस कोऑर्डिनेट, जैसे x और y के बदले में मैं कुछ वैल्यूज अज्यूम करता हूं. से कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 2. x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज 2. इफ आई वांट टू मेक चेंजेस इन दिस कोऑर्डिनेट्स बाय स्मॉल अमाउंट, मतलब I want to change these coordinates by amount 0.1. So what will be the new coordinates? New coordinates will be 1.1 and 2.1. After doing this, what type of structure will be generated? That is most important for us. जैसे देखो ये मैंने assume किया इसके coordinates x, y है. अब देखो ये पॉइंट सपोज यहाँ पे मुझे x में चेंज करना है. कितने अमाउंट से करना है? 0.1 से. So I will move like this by an amount 0.1. y कोऑर्डिनेट में चेंज करना है. लेट अस से आई विल मूव डाउनवर्ड. देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन थे, आई कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय एन अमाउंट 0.1. सिमिलरली ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इंडिकेट्स चेंज अलोंग एक्स एक्सिस. ये जो पॉइंट है यहाँ, इसके बाद आई वांट टू मेक चेंज इन y कोऑर्डिनेट. सो आई कैन मूव डाउनवर्ड एज वेल एज आई कैन मूव अपवर्ड. सो आई मूव डाउनवर्ड. Initially, since I have moved in the forward direction, to compensate it, I will move in the backward direction. यहाँ पे I have moved in the downward direction. Here I will move in the upward direction. So what type of structure is this? अगर दोनों coordinates में changes same amount से कर रहे हैं, so it will be a square, otherwise it will be a rectangle. This is the case in case of two-dimensional system. But we are talking about three-dimensional system. तो अगर थ्री डायमेंशन में एक पॉइंट है पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे हम लोग बाय सम अमाउंट, देन यू विल बी गेटिंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग अ क्यूब.
two dimensions. In case of two dimensions, you are getting a rectangle or square. In case of three dimensional, there is a depth, so you are getting a cube. This is most important for us. We know that this axis is y-axis, this is x-axis, this is z-axis. Earlier we discussed the coordinates of point P are x, y and z. How to remember the things? I will first write the basic coordinates. These are x, y and z. Change in x is denoted by g dx. जैसे मैंने बताया x का वैल्यू 1 था टू कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करते वक्त, उसको चेंज करेंगे पॉइंट 1 से, तो न्यू वैल्यू विल बी 1.1. ये चेंज इंडिकेट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय dx. अब और एक कंसेप्ट याद रख लो. Throughout the subject, whenever we will be using notation D, it stands for differential, and differential means small change. So change in x is dx, same way change in y is dy, same way change in z is dz. ये कोऑर्डिनेट्स है. करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया, x से रिलेटेड यूनिट वेक्टर एज्यूम करना है ax बार, y से रिलेटेड यूनिट वेक्टर होगा ay बार, z से रिलेटेड यूनिट वेक्टर होगा az बार. सो दिस इज द समरी ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब बाकी इक्वेशन जनरेट कैसे करने हैं? Again refer this diagram. This diagram I have generated by making changes in the three coordinates x, y and z by some small amount. अब ये जो लेंथ है, this length, I'm talking about this length. This length is along y axis. तो ये जो change है, I will denote it by dy. Change related to y or differential length related to y is dy. This line is vertical, it is along or parallel with z axis, so this change is dz. Same way this line is along or parallel to x axis, this is x axis, this is the origin, so this length I will denote it by dx. Now this is the cube, it is having some volume. Recall the basic formula. Basically volume is multiplication of length, breadth and height. Now it is volume is a three-dimensional thing. Usual notation of volume is V, but this volume is small volume generated due to differential changes, so I will denote it by dV. जैसे मैंने बताया, याद कैसे रखना है? Volume is three-dimensional system, three-dimensional thing, three-dimensional quantity, so it is multiplication of three things. That means in this case it will be dz into dy into dx. So simply I will write it as dx, dy and dz. This is the equation of differential volume of this cube, which is obtained by making changes in the coordinates of point P, x, y and z. Now one more concept. ये एक surface है. I will just shade this surface for the simplicity. ये shaded surface है. This is the front face of the cube. This is the differential surface. ऐसे याद रख लो. Every differential quantity is a vector quantity. So this is the differential surface. Usually surface is denoted by S. Rather surface area is denoted by S. If it is differential surface, I will write ds. Since it is vector, I will write ds bar. Every vector is denoted by notation bar. So it is ds bar. Now this is the surface. By looking at this diagram, we can easily say area of the surface will be dy into dz. So I will write this equation as dy into dz. But this is a differential surface. It is a vector. It is having certain direction. How to calculate the direction? बहुत सिंपल टेक्निक मैं बोलता हूँ आप लोगों को. ये x एक्सिस है, ऐसे मैं एक्सटेंड करता हूँ बैक साइड पे. So this direction, I mean this surface is perpendicular to x axis. हमेशा किसी भी चीज का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है तो थिंक लाइक दिस. इफ यू हैव सम प्लेन, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, सो डायरेक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ परपेंडिकुलर लाइन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो इन दिस केस आउट ऑफ थ्री एक्सिस x, y and z, y and z axis are not touching to this surface, whereas if you extend x axis it is perpendicular to this surface. तो जो perpendicular axis है उसी का डायरेक्शन देना है. This axis is x, related to x, direction is ax bar, so I will be writing equation as ax bar. और यहाँ पे simplicity के लिए बेस में x लिखता हूँ. Now most difficult thing,
ये एग्जाम में पॉसिबल नहीं है हर एक डेरिवेशन के लिए इतना डायग्राम ड्रॉ करो, देन थिंक ओवर इट एंड देन जनरेट द इक्वेशन। सो मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स सिखाता हूं, ये इक्वेशंस याद कैसे रखने हैं। सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, x का चेंज dx, y का dy, z का dz, डायरेक्शंस x से रिलेटेड है x बार, y से रिलेटेड है y बार, z से रिलेटेड है z बार। मुझे अगर वॉल्यूम का इक्वेशन चाहिए, टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स, मतलब ये जो चेंजेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो चेंजेस मैंने लिखा है, वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल, सो टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस थ्री, dx dy dz। मुझे अगर ds बार बेस x का इक्वेशन चाहिए, ऐसा याद रखना है, बेस x है, जो बेस है वो डायरेक्शन लिखना है, सो डायरेक्शन विल बी ax बार, और जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ये जो मैंने आंसर करके है वो dx dy dz आर कॉल्ड कंपोनेंट, जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड कंपोनेंट डिलीट करना है, मतलब ये डिलीट करना है, dx डिलीट करना है, व्हाट इज रिमेनिंग dy एंड dz, टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, और जो बेस है वही डायरेक्शन देना है। सेम वे इफ आई वांट टू राइट एक्सप्रेशन फॉर ds बार y, अब बेस में y है तो इसका डायरेक्शन ay बार आएगा, ay बार डायरेक्शन है मतलब y से रिलेटेड जो कंपोनेंट है dy, ये मैं डिलीट करता हूं, व्हाट इज रिमेनिंग dx एंड dz, सो इट विल बी dx dz डायरेक्शन ay बार। सेम थिंग ds बार बेस z, बेस z है तो z से रिलेटेड dz है तो ये डिलीट करना है, और बेस z है तो डायरेक्शन az बार लेना है, टेक multiplication of remaining components, so it is dx dy base az bar, that's it। from the exam point of view हम लोगों को ये इक्वेशन लगने वाले हैं। सो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये पूरा कंसेप्चुअल आपको देखने की जरूरत नहीं, इफ यू जस्ट फॉलो दिस सिंपल ट्रिक यू कैन जनरेट एनी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये होगा वॉल्यूम, ये होगा सरफेस, याद कैसे रखना है, वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल, टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री, सरफेस इज टू डायमेंशनल, इसलिए एक स्किप करना है, बाकी जो दो कंपोनेंट बचे उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है। लास्ट पार्ट इज लेंथ, लेंथ इज डिनोटेड बाय dl बार, सो dl बार इज लेंथ, मैं ऐसे लिखता हूं लेंथ अलोंग x, मतलब अलोंग x एक्सिस। अब देखो डोंट गेट कंफ्यूज, सरफेस के लिए मैंने कैसे बताया, जो बेस है वो डायरेक्शन है, और जो डायरेक्शन है उससे रिलेटेड कंपोनेंट डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल x बार डायरेक्शन था तो dx मैंने डिलीट किया, बाकी जो दो बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, लेंथ में उल्टा करना है, मतलब लेंथ इज सिंगल क्वांटिटी, ऐसे याद रखो, वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल, सरफेस इज टू डायमेंशनल, लेंथ और डिस्टेंस इज सिंगल डायमेंशनल, सो dl बार अलोंग x मतलब डायरेक्शन होगा ax बार, तो जो डायरेक्शन है वही कंपोनेंट सिलेक्ट करना है। सरफेस में हम लोग वो कंपोनेंट डिलीट करते थे, लेंथ में वो कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, सो दैट कंपोनेंट अलोंग x इज dx, सो इट्स इक्वेशन इज dx ax बार। लेंथ में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आएगा, देन सेम वे dl बार अलोंग y एक्सिस इज सेम एज dy ay बार, देन dl बार अलोंग z एक्सिस इज dz az बार। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखोगे, मतलब x का चेंज dx, y का dy, z का dz, डायरेक्शन से x बार ay बार az बार, यू कैन जनरेट एनी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप लोगों को डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन जनरेट करने पड़ते हैं, एनी वन ऑफ दिस इक्वेशंस और एनी रिक्वायर्ड इक्वेशंस, तो ये ट्रिक यूज करके यू कैन जनरेट एनी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज अबाउट कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। First diagram, I am considering one cylinder which is a hollow cylinder whose axis is along z axis and its radius is r। कोई भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे इस सिलेंडर के पेरीफेरी पे, लाइक हियर हियर as well as at this side, every point will be at equal distance r, so this surface I will be calling it as r is equals to constant surface, so this is r is equals to constant surface। next एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन देखो ऑब्जर्व कर लो, ये प्लेन फ्रंट साइड पे ही है सिर्फ, दिस प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रादर अगर मैं ये ऐसे जॉइन करता हूं तो दिस इज एक्स जेड प्लेन, इट मेक्स एन एंगल फाई विद एक्स जेड प्लेन, एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस प्लेन is at equal angle phi, so this is called phi is equals to constant surface. This is z is equals to constant surface, same like the Cartesian coordinate system which we have discussed right now.
अब r is radius which is same as the distance. याद कैसे रखना है, देखो, in the previous coordinate system we consider 3 points x y z, change in x is dx, y is dy, z is dz. तो ऐसे याद रखना है. अगर डिस्टेंस है मतलब पहला कंपोनेंट है r, चेंज इन r is dr. सेकंड कंपोनेंट है phi, phi is angle, I will explain it. थर्ड कंपोनेंट इज z, z का चेंज है dz. phi is an angle. What is the equation of change in phi? अब जैसे देखो, ये phi सपोज यहाँ पे 30 डिग्री है. If I will rotate this plane and I will make an angle 45 डिग्री, तो ये नया प्लेन ऐसे आएगा यहाँ पे. So this is corresponding to phi is equals to 45 degree. After rotating this plane by 15 degree, from 30 degree I started and I have rotated it by 15 degree. So I got plane at phi is equals to 45 degree. ये रोटेशन करने के बाद एंड पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक आर्क आएगा. I want to express everything in terms of length. So I need to write equation of length of an arc. Length of an arc is radius into change in angle. Radius, corresponding radius is r and change in angle is d phi. So component corresponding to phi is r d phi. अब directions कैसे लिखने हैं? ये r है तो इससे रिलेटेड डायरेक्शन ए आर बार, ये phi है इससे रिलेटेड ए phi बार, ये z है इससे रिलेटेड ए z बार. सो जैसे हमने कार्टेशियन में डिस्कस किया, सेम टेक्निक, we just have to remember these coordinates. Rest all the things are immaterial, these are not required. अब देखो, ये एक सिलेंडर हॉलो है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, इसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे. मतलब इसी डायग्राम में मैं ये प्लेन पे ड्रॉ करता हूँ, ये प्लेन है, सिलेंडर हॉलो है which is centered at origin. तो इसका intersection will be a vertical line like this. You will be getting a vertical line like this. And if you take intersection of this vertical line with z is equals to constant plane, which is a horizontal plane, you will get a point P. This point is generated because of three structures r, phi and z. So coordinates are P, r, phi, z. जैसे मैंने बताया, सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है. Like the previous case, dv का expression generate करना है. dv is differential volume. Well, volume means take multiplication of the three. तो इक्वेशन आएगा dr into r d phi into dz. सिंप्लिसिटी के लिए मैं r पहले लिखता हूँ, r dr d phi dz. Then ds bar base r. What we learned, जो बेस है वही डायरेक्शन होता है. तो बेस r है तो डायरेक्शन ये r बार, उससे रिलेटेड कंपोनेंट डिलीट करना है. So dr will be deleted. Take multiplication of remaining two, so it will be r d phi dz, direction a r bar. जो बेस है वही डायरेक्शन लिया. Then ds bar phi. Same logic. Phi से रिलेटेड r d phi है, ये मुझे डिलीट करना है. Take multiplication of remaining components, so it is dr dz a phi bar. क्योंकि बेस में phi है, so direction is a phi bar. Same way ds bar z. z कंपोनेंट है, टू dz डिलीट करना है. टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, इट विल बी dr इनटू r d phi. सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले r लिखता हूं, सो इट इज r dr d phi एंड डायरेक्शन इज a z बार, क्योंकि बेस यहां पे z है. देन dl बार, दैट इज लेंथ अलोंग r. सेम लाइक द प्रीवियस केस, लेंथ अलोंग r मतलब डायरेक्शन ये r बार होगा. लेंथ के लिए जो कंपोनेंट है, जो डायरेक्शन है, वही कंपोनेंट लेना है, डिलीट नहीं करना है. So related to r, component is dr, so its equation is dr ar bar. Then dl bar along phi. Related to phi, component is r d phi, direction is a phi bar, so it is r d phi a phi bar. Then dl bar along z. Related to z, component is dz, direction is az bar, so it is dz az bar. That's it. डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ आप लोगों को इसमें ये सेट में से कोई इक्वेशन लगेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशंस व्हिच यू कैन जनरेट जस्ट बाय मेमोराइजिंग दीस थ्री थिंग्स एंड यूजिंग सिंपल ट्रिक्स. द लास्ट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्स्ट डायग्राम, आई हैव कंसीडर्ड वन स्फीयर. डू रिमेंबर, स्फीयर इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉल, सो इट इज अ स्फीयर, इट्स नॉट सर्कल. Radius of this sphere is r. Sphere is centered at origin,
So every point present on the periphery of this sphere is at equal distance r, so it is r is equals to constant surface. Next, I have considered one cone whose apex is at origin. This is the origin. One side of cone makes an angle theta with z axis, so this total angle becomes 2 theta. अब देखो, minimum value of 2 theta is 0 and maximum value will be 2 pi, that is 360 degree, क्योंकि ये पूरा हम लोग रोटेट कर सकते हैं ऐसे. That's why variation of theta throughout the subject is taken as 0 to pi. Again same logic, ये एंगल थीटा मैंने इंडिकेट किया है. सो एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस ऑफ कोन makes same angle theta, so it is theta is equals to constant surface. Next, phi is equals to constant surface, which we already discussed. One important thing which I haven't explained previously, ये थीटा एंगल है. वेरिएशन ऑफ थीटा मतलब दिस एंगल थीटा इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन. मिनिमम एंगल आई मीन ये पूरा प्लेन हम लोग ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं इसके ऊपर. सो मिनिमम एंगल विल बी 0. मैक्सिमम ये पूरा रोटेट कर सकते हैं हम लोग. सो मैक्सिमम विल बी 2 पाई. सो थ्रू आउट द सब्जेक्ट वेरिएशन ऑफ फाई इज टेकन एज 0 to 2 पाई. अब ये स्फीयर है, ये कोन है. इफ यू टेक इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड अ कोन, इसी डायग्राम में मैं ड्रॉ करता हूँ. ये कोन ड्रॉ किया मैंने, सेम कोन which we have drawn separately. ये so what will be the intersection of these two structures? एक स्फीयर है और एक कोन है. ऐसा सोच लो, आइसक्रीम का कोन है, हम लोगों ने ऐसा पकड़ा, उल्टा तो नहीं पकड़ सकते, ऐसा पकड़ा है, उसके ऊपर स्फीयर रखा है, मतलब ये एक आइस बॉल रखा है. सो इंटरसेक्शन इज अ कॉमन पोर्शन. तो कोन ऐसा है, उसके ऊपर एक स्फीयर है, तो इंटरसेक्शन विल बी अ सर्कल. सो as an intersection of these two things you will be getting a circle. ये ऐसा है. radius of this circle is r sin theta. very simple logic. ये लेंथ r है, ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है. so this length will be r sin theta. then you are getting a circle which is rather a horizontal circle due to intersection of sphere and a cone. If you take intersection of that horizontal circle, ये जो सर्कल आ रहा था इसका इंटरसेक्शन ये वर्टिकल प्लेन के साथ ले लेंगे, मतलब फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लेन के साथ ले लेंगे. सिंपल लॉजिक है. सो दिस सर्कल विल पेनिट्रेट थ्रू दिस प्लेन थ्रू वन पॉइंट P and coordinates of point P are r, theta and phi. Up like the previous case. Now remaining part, everything is same like the previous two, similar to the previous two coordinate system. क्या करना है हम लोगों को? बेसिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं r, theta, phi. r is radius मतलब distance, so its variation is dr. theta is angle, similar to the last case, it is r d theta. phi related to phi, ये सर्कल जो आ रहा है उसका हम लोग phi के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं. so related to phi, radius of this circle is r sin theta and variation of phi is d phi. Directions, corresponding directions will be ar bar, a theta bar, a phi bar. Now we have to generate different equations. so dv, differential volume, since it is a volume, it is three-dimensional thing, so it is multiplication of the three components. so it is dr into r d theta into r sin theta d phi. सिंप्लिसिटी के लिए मैं रीअरेंज करके ऐसा लिखता हूँ, r स्क्वायर sin theta dr d theta d phi. मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल r इंटू आर, r स्क्वायर, फिर मैंने dr लिखा, r स्क्वायर, फिर sin theta लिखा, फिर dr d theta d phi. then ds bar base r, बेस r है मतलब dr डिलीट करना है, टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग टू, सो इट बिकम्स r स्क्वायर sin theta d theta d phi a r bar. क्योंकि बेस आ रहा है तो डायरेक्शन ए आर बार है, इसलिए हमने डी आर डिलीट किया था. देन डी एस बार बेस थीटा, बेस थीटा है मतलब आर डी थीटा डिलीट करना है, टेक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2. तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले ये ऐसा लिखता हूँ, आर साइन थीटा डी आर डी फाई, बेस थीटा है सो डायरेक्शन इज ए थीटा बार. देन डी एस बार फाई, बेस फाई है तो ये कॉम्पोनेंट डिलीट करना है, मतलब ये डिलीट करना है,
take multiplication of remaining 2. So I will write it as r dr d theta direction a phi bar. These are the equations of surface and this is equation of volume. Now like the previous case, लास्ट पार्ट dl बार along r, dl बार मतलब लेंथ, जो लेंथ से रिलेटेड along r है मतलब वही डायरेक्शन लेना है. सो r से रिलेटेड डायरेक्शन है ar बार और कंपोनेंट है dr, सो इट इज dr ar बार. देन dl बार along थीटा, थीटा से रिलेटेड देखो क्या कंपोनेंट है r d थीटा, सो सेम कंपोनेंट लेना है r d थीटा a थीटा बार. फाई से रिलेटेड क्या कंपोनेंट है r sin थीटा d फाई. So dl bar along phi is r sin theta d phi a phi bar. So this is all about the equations of spherical coordinate system, and that's it for this present video. But do not skip this part because each and everything which is covered in this video are the basic things which are required throughout the subject. So that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.